Okay, students, so I think I am live and we are all set to start our class. If you could see me properly, if you could hear me properly, let me know. Let me know. Let me know with the help of thumbs up in the comment. Okay, let us start. Today's class is going to be very, very important. Today's class is about chemistry, right? Can we start? Is everything clear? Audio, video, everything? Let me know. Right? So here we go. Just a second. We will start within a minute. Okay. Chalo, let us start. So we are going to study about what? We are going to study about the study of compounds. There are four chapters in your history. There are four chapters in your history. Okay. There are four chapters in your chemistry textbook. Nitrogen chloride, then ammonia, nitric acid, and sulphuric acid. Now, today's video is a one-shot video whereby we are going to study all four chapters together and comparatively, in comparison. Remember that after watching this video, this is going to be very, very helpful for you all. And after watching this video, please make sure that before we start, you are sitting for this class with your notebook and pen because you have to write down something. If you go through this lecture properly and if you write down all the proper points and periodically if you keep on revising this point, I don't think so you need any other help, okay, to understand this chapter. Okay? So please make sure that you are attending this class with proper notebook and pen, right? Now you will see that you have a chart in front of you which tells you about what? Okay, laboratory preparation of ammonia, hydrogen chloride, sulfuric acid, and nitric acid. I am not following the same order of these chapters which is given in your textbook. I think in your textbook you have hydrogen chloride first, then ammonia, then nitric acid, and then sulfuric acid. I have rearranged these chapters so that it will be easy for me to teach you and easy for you to learn if we go in this particular order. Because we know that ammonia, okay, ammonia is base and all these other three are acids. So we have separated base and we have separated acid, right? Any doubt? Can we start? Okay, fine. Here we go. So, first we will talk about the laboratory preparation. I was talking about this. Now, let me take this as a page number 1 where we are going to talk about ammonia. Right? Formula for ammonia is NH3. Dry ammonia is neutral. Dry ammonia is neutral. You can write this down. Okay? Dry ammonia gas, we can say it is neutral. But when it comes in contact with air,
It will absorb the moisture. Ammonia is highly soluble in water. We will see the fountain experiment related to this point, that is solubility of ammonia. But when this ammonia gas comes in contact even with the atmosphere, it will absorb. It will absorb water. Okay, it will absorb water from the atmosphere. Okay, or we can say aqueous ammonia, or even we call this as a liquor ammonia. In your examination, you may get a question whereby you have to distinguish between dry ammonia gas and liquor ammonia. So this liquor ammonia or aqueous ammonia, ammonia with water, is what? Is basic in nature. Please note this because this can be your examination question. There can be a distinguish between, okay, question related to distinguish between liquor ammonia and dry ammonia gas. I will show you over here. So this was a question from your board examination whereby, okay, whereby you distinguish between liquor ammonia, okay, liquor ammonia and a dry ammonia, okay. I think it is here or maybe in the same worksheet, okay. It is somewhere, okay. So please keep in mind, please note down this point because this is very, very important, okay. Dry ammonia and aqueous ammonia or liquor ammonia. Dry ammonia will be neutral and liquor or aqueous ammonia will be basic in nature, right? Now, for this chapter, before you start this chapter, these are two word reactions. Whatever order I am telling you, if you follow that order, this chemistry will be very, very easy, right? You have to remember that for ammonia, okay, right? This word reaction, this is about the, okay, let us talk about the laboratory preparation or industrial preparation later on. Let me focus your concentration on this point, that is ammonium salt plus alkali. Again, this can be a MCQ question, okay, a MCQ question or 1 mark question. Ammonium salt plus alkali, any idea what it will give? Write your answer in the comment box what this will give you. Ammonium salt and alkali, right? So in most of the important reaction, these are two products. Okay, what are two products? One is the salt, other one is water. Can you tell me what is the third product which you get? Okay, just I'm waiting for your answer in the comment box. Tell me what is the third product which you get. Okay, this was ammonium salt. Now this is ammonia. Ammonia. When this reacts with base, okay, when this react with base, what product do you get? Chalo, first give me answer for this. I think answers are already coming. Okay, yes, absolutely right. Third product is third product is okay. Ammonium salt plus alkali gives you salt plus water plus ammonia. Okay, and this ammonia is what? Is gas, right? Ammonia is what? It is gas, right? And ammonia plus base. Okay, ammonia plus base. I'll talk more about this base. Okay, but before that, what do you get? You will be getting a metal. You will be getting a metal. Okay, metal, ammonia, NH3 base, oxygen plus water, plus what? Plus dash. Generally, this is the exam question. Okay, ammonium salt with alkali gives you salt, water, and ammonia gas. But ammonia with base gives you what? Metal plus water plus what? Any idea? Chalo, type in the comment box. Yes, absolutely right. It is nitrogen gas. It is nitrogen gas. तो जब भी आप लोग ये चैप्टर पढ़ाई करने का शुरू करोगे, प्लीज मेक श्योर दैट ये दोनों पॉइंट्स आपको ठीक से आते हैं. ओनली देन ओके. ये दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये चैप्टर में देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिएक्शन. एक रिएक्शन वो है जिसमें आपका प्रोडक्ट है अमोनिया,
और दूसरा वो रिएक्शन है जिसका जिसका जिसमें आपका प्रोडक्ट है नाइट्रोजन गैस, अमोनिया गैस एंड नाइट्रोजन गैस। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, ये याद करना पड़ेगा आप लोगों को। इज इट फाइन? चलो बताओ, आपको समझ में आ रहा है क्या? ओके, एनीवे आई हैव नॉट एक्सप्लेन यू एनीथिंग। यहाँ समझने जैसा कुछ नहीं है, चीजों को याद रखना। ओके, कि ड्राई अमोनिया गैस इज न्यूट्रल whereas aqueous or liquor ammonia is basic in nature. Now, by the way, what is aqueous ammonia? Aqueous ammonia means ammonia in water. Ammonia in water. क्या होगा उसका molecular formula? Okay, molecular formula will be ammonium hydroxide. Okay, in water it is ammonium hydroxide, right? अब केमिस्ट्री में आपको क्या करना पड़ेगा? व्हाट यू हैव टू डू इन केमिस्ट्री, कुछ चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, कुछ चीजें आप लोगों को बाय हार्ट करनी पड़ेगी। ओके, आर यू ओके विद दिस? फाइन, सो हियर वी गो। ओके, हियर वी गो। दिस इज व्हाट, दिस इज लैब प्रिपरेशन। ये फर्स्ट वाला इक्वेशन, दिस इज लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। लेट अस टॉक अबाउट। ओके, नाउ बट बिफोर वी स्टार्ट एट, जरा अल्कली और बेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अल्कली एंड बेस? अगेन लास्ट ईयर दिस वाज अ बोर्ड क्वेश्चन, दिस वाज अ बोर्ड क्वेश्चन। नाउ सी, right now in front of you what you have a kind of Venn diagram. Okay, अगर आप लोगों ने मैथ्स लिया, if you study maths, तो आप लोगों ने सेट्स इस चैप्टर में ये Venn diagram पढ़ा होगा। Okay, now the outer circle which you see, okay, the outer circle which you see, okay, that outer circle is base। Okay, so whatever you find here, okay, metal का oxide, okay, metal का oxide and hydroxide, please pay attention। Okay, pay attention, this point is very important, you must know this as a student of chemistry, you must know this। metal का oxide and hydroxide, they all are base। Okay, they all are base। Okay, so you can check here कि metal Mg, we will concentrate mainly on first 20 elements of a periodic table। why first 20 elements of the periodic table? क्योंकि वही हमारे syllabus में most of the questions will be related to first 20 elements। Okay, so magnesium oxide, potassium oxide, calcium oxide, sodium oxide, I hope you know crisscross method of writing the formula। Okay, magnesium valency is +2, Mg valency is +2, oxygen valency is -2। Okay, so this gets cancelled, two to get cancelled, so no crisscross। For potassium, valency is +1, and for oxygen it is 2। So when you crisscross, what formula do you get? K2O. Okay, and if it is aluminium, aluminium valency is 3, so it goes there, and oxygen valency is 2, so Al2O3। Right now, so metal का oxide और metal का hydroxide, that is what, that is base। So all whatever all these compounds which you see here, okay, here we have three, right? They all are bases। Okay, they all are base, individually they are base। but एक special category होता है base का which dissolves in water। Okay, there is a special category of bases which dissolve in water। Okay, they are called alkali। Okay, they are called what? Alkali। Why? Because they dissolve in water। Okay, so this is a difference between base and alkali। Last year there was a question where you have to find out odd one out, or maybe I think that it was a MCQ based question। Okay, where they have given up four options and they have asked कि which of the following does not, okay, or dissolves in water। So this was the answer। I don't correctly remember what was the question, लेकिन उसका आंसर ये था। Now how you can remember this alkali? तो अगर periodic table देखेंगे, if you see periodic table, तो Na and K are those alkali। देखो ना periodic table में first group, what is the name of first group? इस group का नाम क्या है? Alkali metals। करेक्ट ना, अल्कली मेटल्स। तो इस इसमें कौन कौन से मेटल है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ओके, करेक्ट ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ओके, एंड देन वी हैव अल्कली अर्थ मेटल, उसमें से सिर्फ एक ही है। ओके,
Is this a soluble in water, calcium hydroxide? Answer is yes, but it is sparingly soluble. बहुत थोड़ा सा, ओके, ज्यादा डिजोल्व तो होता है बट स्पेरिंगली soluble, बहुत कम डिजोल्व होता है. एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? आपको ये याद रखना है, ये बाय ऐड करना है अल्कली. ओके, इन आवर सिलेबस वी हैव 3 अल्कली. Maybe you may get a question whereby they will give name something like this, okay, Al2O3, and they will ask you to find out the odd one out. Okay, odd one out is aluminum oxide, because this, okay, all are base, but remaining three are alkalis, and this is not an alkali. Okay, this is just a base, right? Is it clear? Are you understanding? आपको एक बात याद रखना है, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दैट कि मेटल ऑक्साइड, ओके, मेटल ऑक्साइड ये बाहर करके रखो. थ्रू आउट केमिस्ट्री यू विल रिक्वायर दिस. एंड नॉन मेटल ऑक्साइड, ओके, नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड. नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर. Okay, non-metal oxide is acidic in nature, whereas metallic oxide is basic in nature. Okay, it is basic in nature. तो ये सारे के सारे जो है metal और oxide. Okay, I hope so you have a fair idea about a periodic table. Okay, about a periodic table. Okay, if you say OH होगा तो वो alkali है. No, that is absolutely wrong. Okay, there are certain special categories of bases. हमको तो तीन ही याद रखना है. सोडियम hydroxide, potassium hydroxide, and calcium hydroxide. Okay, these are three as per our syllabus which are soluble in water. Okay, और ये जनरली ये ऊपर वाले दो जो है अल्कली मेटल भी है, so they forms in the group of alkali. Okay, they are alkali, they are soluble in water. And calcium जो है वो, what is that? Alkaline earth metal, calcium and magnesium, but magnesium is not an alkali, it is a base. Okay, आगे बढ़ने से पहले I want you all to understand this कि metal oxide is basic in nature. Okay, and non-metal oxide is acidic in nature. Okay, अगर मालूम है आप लोगों को तो it will be well and good. Okay, अगर नहीं मालूम है तो write this down. This is very important, and this you are studying from your right from your 8th standard onwards. Okay, 8th में भी था, 9th में भी. Sir, I referred to your notes through Pravin sir app. It was really helpful. Best ICSE notes. Thank you very much. Okay. So you can follow you can go to my website, which is www.pravinsir.com, or you can download an app from a Google's Play Store, which is called Pravin sir app. Okay. There you will get all these notes. Right? Okay. So please remember this. ये आगे बहुत काम है, आने वाला है. All right. Okay. बढ़ते हैं हमारे फिर से board के ऊपर where we have studied this. Okay, now now see this, we are going to use ammonium salt. Okay, we are going to use ammonium salt. अगर आप लोग केमिस्ट्री ठीक से पढ़ोगे तो it is very easy, otherwise it is very difficult. Okay, now let us talk about the radicals. What are radicals? Radicals are group of atom. Radicals. Okay, I'm not going to teach you PPT दिखाया बस मैं read करके दिखा रहा हूँ. I'm not going to do that. I'm going to explain you each and everything. So stay connected and watch the entire video. How many radicals do we have in our syllabus? Radicals तो बहुत सारे होते हैं. Okay, in 9th standard you might have studied in language of chemistry, but which radicals we are going to concentrate on? Okay, so radicals like sulfate, then carbonate, and nitrate. ओके, एंड नाइट्रेट. नाइट्रेट का वैलेंसी 1 है, सल्फेट का वैलेंसी -2, और कार्बोनेट का -3. सो दीज आर द रेडिकल्स व्हिच वी मोस्टली यूज. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम इज आल्सो रेडिकल, पॉजिटिव रेडिकल, NH4+. तो अमोनियम सॉल्ट किससे बन सकता है? ओके, सॉल्ट इज पॉजिटिव रेडिकल प्लस नेगेटिव रेडिकल. ओके, राइट. So ammonium sulfate is
is what we can use this salt. Okay, तो कौन सा salt बनाएगा अमोनिया सल्फेट के साथ में अमोनियम सल्फेट, अमोनियम कार्बोनेट and ammonium nitrate. Nitrate is NO3, not NO. NO is nitric acid, NO3. Okay, carbonate CO3. Okay, yes. तो ये सॉल्ट बना सकता है, राइट? हाँ, और उसके साथ और एक सॉल्ट है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अमोनियम क्लोराइड. ओके, अमोनियम क्लोराइड, राइट? अमोनियम क्लोराइड, क्लोरीन का वैलेंसी 1, अमोनिया का वैलेंसी 1, सो नो क्रिस क्रॉस, सो नो क्रिस क्रॉस, राइट? अच्छा, तो हमारे पास हाउ मेनी सॉल्ट्स वी हैव नाउ? वी हैव ऑल टुगेदर 4 सॉल्ट्स, राइट? कौन कौन से 4 सॉल्ट्स है हमारे पास? तो वी हैव अमोनियम सल्फेट वाला, एमोनियम कार्बोनेट वाला, एमोनियम नाइट्रेट वाला और अमोनियम क्लोराइड वाला, राइट? ओके, अब जरा ध्यान से देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा. ओके, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? इफ यू नो एंटायर योर सिलेबस प्रॉपर्ली, इट विल बी वेरी इजी टू प्रेडिक्ट व्हाट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. ओके, तो जनरली व्हाट वी डू इज वी यूज अमोनियम क्लोराइड, वैलेंसी इज 1, ये दो यूज करते हैं. ओके, दिस बोथ वी आर गोइंग टू यूज. जैसे मैंने ये लिखा अमोनियम क्लोराइड, आई कैन आल्सो यूज अमोनियम. ओके, अमोनियम सल्फेट, सल्फेट का वैलेंसी 2 है, अमोनियम का 1, सो NH4 ट्वाइस SO4. ओके, ये दो यूज करते. ओके, बाकी के दो क्यों नहीं यूज करते? तो जस्ट इसको कैंसिल कर दो, ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं कार्बोनेट वाला, और ये है सिलेबस में. द रीजन व्हाई वी डोंट यूज दिस इज बिकॉज़ ये हाईली एक्सप्लोसिव होता है. व्हाट इज दिस? दिस इज हाईली एक्सप्लोसिव, so it is very dangerous to handle this in a laboratory. इसलिए हम लोग ये यूज नहीं करते. ओके, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये पूछ सकते हो. ओके, we don't use it. Then which are the salts which we use? It is ammonium sulfate or ammonium chloride. Is it fine? Is it fine? Okay, what about alkali? अब हमको पता है कि हमारे पास अल्कली तीन तीन है. कौन कौन से 3 alkalis we have? We have what? Sodium hydroxide, we have potassium hydroxide, and we have calcium hydroxide. Okay, calcium hydroxide. Okay, अभी अभी मैंने आपको ये टेबल दिखाया था, and as per that we have 3 alkalis. Right now we have what? 3 alkalis: sodium hydroxide, potassium hydroxide, and calcium hydroxide. Now comes the question कि which alkali do we use and why? Okay, so generally ये first दो जो है वो हम लोग नहीं use करते. Okay, we don't use this. Why we don't use this? Because this is deliquescent. Okay, deliquescent. I hope आप लोगों को deliquescent जो है उसका meaning पता होगा. Okay, anybody, what is the meaning of deliquescent? What is the meaning of deliquescent? Deliquescent means what? It absorbs moisture from the atmosphere. Moisture means what? Moisture means water. Okay, from atmosphere and get dissolved in it. And get dissolved in it. Okay, तो ये एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछते हैं. कवरिंग ऑल द क्वेश्चन. ओके, मैं पीपीटी रन करके रीड करके नहीं दिखा रहा हूँ, सो दैट अगर आपको सिलेबस पता है कि आपके सिलेबस में क्या है क्या नहीं, तो यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर एवरीथिंग. ओके, these two are deliquescent in nature. Okay, what is deliquescent? Again, deliquescent means that absorbs what? Moisture or water and get dissolved into it. Okay, turns liquid by absorbing moisture. Absolutely right. Okay, so what we are going to use? तो हम लोग calcium hydroxide use करेंगे. Okay, what we are going to use? We are going to use is calcium hydroxide. क्या reason है calcium hydroxide का? Because it is easily available and cheap. Okay, it is cheaply and easily available, right? So this we are going to use. Fine. Okay, तो ये हम लोग use करने वाले हैं. Then what we are going to get? We are going to get salt, water, and ammonia. Let us consider कौन सा salt मिलेगा. Do you want me to write this equation? अगर हम लोग ये use करते हैं, I hope this green color is clearly visible. If any problem with color, let me know. If I am using ammonium sulfate and a calcium hydroxide, okay, what product I am going to get? Salt. Which salt? Okay,
So this is positive part, this is negative part, this is positive and this is negative. Okay, so I'm going to get calcium sulfate, isn't it? Okay, I'll be getting what? Calcium sulfate, right? Ca valency 2, sulfate valency 2 plus water H2 plus ammonia, which is NH3, ammonia gas. Right? Is this equation balanced? Okay. So balance कैसे करना है equation? If you don't know how to balance the equation, what you can do is you can go to, okay, you can go here. Okay, go to my YouTube channel, right? Pravin Sir's PrepWin ICSE and go to chemistry playlist. Okay, if you see this playlist, I have a video on balancing the chemical equation, right? Balancing the chemical equation. It is just 18 to 19 minutes ka video. You can see it in 1.25x. That will save a lot of your time. Please go through this. Okay, I'm going to use same technique today to balance the equation. Just balance and tell me how to balance this. Balance SO4. Okay, Ca is 1, Ca is 1, hydrogen is 8. This is 2 and 4. Okay, in half, 2, 4, 6, 3, 4, 5. Okay, it require balancing. Just balance and tell me how to balance this, right? Okay, so you need to balance this, right? Okay, चलो आप लोग balance करो, then I'll balance this. Okay, तब तक मैं ये वाला solve कर लेता हूँ. This equation is also very important. Okay, कि अमोनिया कब मिलता है, अमोनिया गैस और नाइट्रोजन गैस कब मिलता है. Okay, when you heat ammonia, I think everything is clear over here. Ammonia, which means what? NH3. Okay, you take ammonia and you treat with base. अब यहाँ बेस क्या होगा? अभी अभी मैंने आपको बताया था बेस क्या होता है. It is oxide of what? Metal or non-metal? Base is oxide of metal or non-metal. चलो टाइप करो. टाइप दिस. अमो ओके, बेस किसका ऑक्साइड होता है? मेटल का कि नॉन मेटल? मेटल का या नॉन मेटल का? यस, फटाफट. ओके, यस, एब्सोल्युटली राइट. ओके, ये मेटल का ऑक्साइड होता है. ओके, मेटल का हमारे सिलेबस में कौन कौन से मेटल है? बहुत सारे मेटल है. ओके, नॉट बहुत सारे, सिर्फ 3 मेटल है. एक है Mg, देन व्हाट? ओके, मैग्नीशियम है. देन वी हैव व्हाट? कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम. अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड लेता हूँ तो व्हाट डू आई गेट इज मेटल. मेटल मींस मैग्नीशियम plus water. What is water? H2O. And what do I get? Ammonia. Okay, oh, sorry, nitrogen gas. Right? Yes, we also have aluminium, जिसका valency 3 है. Okay, so Al2O3. And also we have calcium. And we have calcium also. Okay, yeah, I think हमारे, yes, ये हमारे syllabus में. Magnesium, calcium and aluminium. These two reactions are not that important from your examination point of view. ये generally question आप लोगों को MCQ में, okay, MCQ में या कुछ fill in the blank इस kind, okay, they will ask in this form, right? Correct? Can we move ahead? Can we move ahead? This is what there are two lab preparation. First one is this, okay. Second ये याद रखना है आप लोगों को, so that, okay, ताकि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए. Then what? There is one more lab preparation of ammonia. There is one more lab preparation of ammonia. Lab preparation number 2. Will you tell me? Okay, lab preparation 2. What is that? And this will be our third equation. Correct, na? Our third equation. Something plus something gives you what? Ammonia. Okay. What is that? Yes. Yes. Okay. क्या यूज करेंगे हम लोग? मेटल नाइट्राइड. Metal and nitride. Nitride means nitrogen. Metal nitride plus water. Water add किया, hydrogenation. Okay.
Yeah, hydrolysis. Yes, split होगा. Okay, so what will you get? You will get ammonia gas, and what will be another product? Okay, another product. मेटल नाइट्राइड कौन सा मेटल है हमारे पास? ओके, यहाँ पर भी तीन मेटल है, बट मोस्टली एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो अल्यूमिनियम नाइट्राइड वाला. Aluminium valence is 3. Nitrogen valence is 3. Plus water give you what? Yes, it will give you ammonia gas. And it will give you what? One precipitate. एक salt मिलेगा, which will be in a form of precipitate. Okay. And hydrolysis of water. Okay. Hydrolysis मतलब what? वाटर स्प्लिट हुआ एज एच एंड ओ एच, एच प्लस एंड ओ एच माइनस. ओके, ये एच और एन दोनों कंबाइन हो गए. ओके, एच एंड एन, एन का वैलेंसी 3, एच का वैलेंसी 1, सो क्रिस क्रॉस इज NH3. क्रिस क्रॉस इज NH3. और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? ओके, दिस इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. एल्यूमिनियम वैलेंसी इज 3 and hydroxide valence is 1, so Al OH thrice. आई होप आपको वैलेंसी वगैरह सब पता है. सो वट एवर आई एम सेइंग दैट विल मेक सेंस टू यू. अगर वैलेंसी नहीं पता है, बेस ही नहीं पता है, तो दिस क्लास विल बी वेरी बोरिंग फॉर ऑल यू, राइट? ओके, ऑलराइट. So balancing is required over here. Let us check. Aluminium 1, aluminium 1. Okay, should I erase this? Hydrogen is what? 3 and 3 is 6. And here you have what? 2. अगर ये 3 डाल देंगे तो आई थिंक बैलेंस हो चुका है. Aluminium 1, nitrogen 1, nitrogen 1, hydrogen 6, 3 and 3, 6, oxygen 3 and oxygen 3. I think this is balance. Right? Okay. I have very less space remaining over here. So what I will do is, चलो, is this clear? Is this clear? आप लोगों को 3 रिएक्शन याद रखने. Which are those 3 reactions? Which are those 3 reactions? एक ये वाला, दूसरा ये वाला, and तीसरा ये. Okay, which is the first reaction? Which is the first reaction? So first reaction है ammonium salt. Okay, you get ammonia from ammonium salt. Ammonium salt react with alkali. Ammonium salt react with alkali to give you salt plus water plus ammonia. Okay, साथ ही साथ another important part is how do you get ammonia? How do you get nitrogen gas? तो अमोनियम सॉल्ट से मिला अमोनिया, अमोनियम सॉल्ट से मिला अमोनिया, और अमोनिया से मिलेगा आपको नाइट्रोजन गैस. अमोनिया से मिलेगा नाइट्रोजन गैस. बट फॉर दैट okay, for that what you have to do, you have to react ammonia with the base. Base means what? Metallic ऑक्साइड. ओके, विथ मेटालिक ऑक्साइड. सिलेबस में ये 3 इक्वेशन है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और कैल्शियम का ऑक्साइड. ओके, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स हियर? ओके, मेटल वाटर प्लस नाइट्रोजन. आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि एग्जाम को जाते वक्त ओके ये वर्ड रिएक्शन जो है, ये वर्ड रिएक्शन ओके उसको जरूर पढ़कर जाना. दिस वर्ड रिएक्शन, हाँ, इसको आपको पढ़कर जाना, इस वर्ड रिएक्शन. Right? Because you don't know how teachers are going to set the question paper. Maybe in a form of a MCQ, in a form of a fill in the blank, match the following, answer in short or anything. Okay? So remember that. Yes. I did not understand Ipshita. So please be specific with your doubt so that I understand it. Correct? I hope you are sitting with pen and notebook and you are writing this stuff. Okay, ये 3 चीजें आप लोगों को याद रखना है. And there are about 6 things which you have to remember from this chapter. तो आधा complete हो गया. Now what is the fourth one? Fourth one is method of collection. Okay, how this ammonia is collected? Method of collection. Will you tell me what is the method of collection?
अब हमारे सिलेबस में अगेन हमारे सिलेबस में 3 मेथड्स ऑफ कलेक्शन. Okay, let me give you 3 options. Okay, upward displacement of air, upward displacement of air. Second is what? Downward displacement of air. Okay, downward displacement of air. And third one is over the water. Over the water. ठीक है. और सबका कंडीशन है. ओके, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. व्हेन डू वी यूज दिस मेथड? ये मेथड तब यूज किया जाता है. व्हाट इज अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट? हाउ डू यू रिमेंबर दिस अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट? तो ये जार का मुंह जो होगा वो अपसाइड होगा. ओके, व्हेन जार का मुंह ऊपर होगा दैट इज कॉल्ड द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. और जार का मुंह जब नीचे होगा, ओके, तो इट इज कॉल्ड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. ओके, व्हेन वी यूज अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, एयर जो है वो ऊपर डिस्प्लेस होगा. This happens when your gas, okay, this happens when your gas is heavier than, okay, gas heavy है, okay, gas जो है वो heavy है. गैस अगर हेवी है so that will settle down and it will, गैस ने जगह नहीं तो एयर को क्या कर देगा? बाहर डिस्प्लेस कर देगा, राइट. एंड व्हेन डू यू गेट डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर? तो आपका गैस जो है जब लाइटर होगा तब. ओके, और ओवर द वाटर कप व्हेन इट डू नॉट, जो आप लोगों ने ऑब्टेन किया गैस डज डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, राइट. तो फॉर अमोनिया व्हिच वन इज करेक्ट? And when we use downward displacement of air, so air when your gas, opted gas is lighter than air. Okay, so lighter gas, okay, will occupy this position और वो air को क्या करेगा? बाहर push कर देगा, right? So in this case, okay, third definitely cannot be answer. आपको आंसर पता नहीं है, you can use the method of elimination. Third cannot be definitely the answer. क्यों? क्योंकि ammonia found that it is highly soluble in water. So third cannot be answer. So what is the answer? Okay, what is the answer? Correct answer is, I think some students are already answering it. Okay, some students are already giving the answer. Correct answer is downward displacement of air. Ammonia के लिए downward displacement. Why? Because ammonia is lighter than air. Because ammonia is lighter than air. Okay, आगे जब आप लोग पढ़ोगे HCl, तो HCl के लिए होगा upward displacement of air. Why? Because HCl. Okay, अगला गैस जो होगा मेरा या अगला चैप्टर जो देखेंगे that is about hydrogen chloride. So that is heavier than air. So by upward displacement, right now. So here downward displacement of air. Any doubt, anybody? Any doubt? Correct. Fine. और दो चीजें याद रखनी, जैसे मैंने आपको बताया remember. So what you have to remember next? Should I use different color? फिफ्थ वाला क्या याद रखना है आपको? आपको याद रखना है that is, how do you identify कि गैस मिला? कैसे आप टेस्ट? हाउ डू यू कंफर्म जो गैस मिला वो अमोनिया? क्या एनी आइडिया? चलो बताओ. व्हाट इज दैट फेमस आइडेंटिफिकेशन फॉर अमोनिया गैस? अमोनिया गैस इज न्यूट्रल. ओके, अमोनिया जब वो वाटर में या वाटर में ऐड हो जाएगा बेस शो करेगा. तो लिटमस कैन नॉट बी अ कंक्लूसिव टेस्ट. यस, डेंस व्हाइट फ्यूम. ये आंसर सबको पता होता है. दैट इज डेंस व्हाइट फ्यूम. किसके साथ में? विद whom it forms a dense white fumes? With whom? किसके साथ में? Okay, with what? If you have a what jar filled with ammonia,
तो क्या करेंगे आप लोग? तो क्या करेंगे आप लोग? ओके, किसके साथ में? तो with hydrochloric acid, with HCl acid. So you will take a glass rod. Okay, you will take a glass rod and you will dip it in a HCl acid. You will dip it in a HCl acid और वो glass rod जो है जिस jar में ammonia gas है उसके अंदर dip करेंगे. Okay, so what you will see? Dense white fume. और dense white fume अगर form हुआ, dense white fume अगर form, this is confirmed कि the gas which you have obtained is ammonia. Is ammonia. एक last वाला point cover करेंगे. Then we will shift towards HCl. This is very important. Okay. What is this? This is about Nessler's reagent. Nessler's reagent. Okay, reagent. And I think 2023 में ये question आएगा. If I set the paper, I'll put this question. Last year brown ring test आया था. That was the surprise package. इस साल ये वाला Nessler's reagent जो है बहुत होगा, important होगा. Please type in the comment box. क्या होता है? What is Nessler's reagent? Okay, this is the last part. ओके, ये नहीं आता है. ओके, तो याद करो, अदरवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट ईयर आई टोल्ड द स्टूडेंट कि ब्राउनिंग टेस्ट इज इंपॉर्टेंट. दिस ईयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, व्हाट इज नेस्लर रिएजेंट? एनीबॉडी? ओके, वी विल टॉक अबाउट आरजो. Don't worry, we'll talk about balancing the equation. I already have a video based upon balancing the equation. You can see that. Go to my channel. Okay, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था. I think you can late. Or go to our YouTube channel and then check out. Okay, check out chemistry का playlist. Okay, here I have a video on balancing the equation. किधर गया? हाँ, this one. It is just an 18 minutes video. सारा balancing का चक्कर जो है, okay, सारा doubt जो है वो खत्म हो जाए. All right, चलो, come back here, come back here. Nessler reagent. I want formula for Nessler reagent. Nessler's reagent. Is my voice not clear? My voice not clear. Just let me know. Can you is my voice not clear? Is it fine now? Is there any? Is it clear? Is it fine? Can you hear me properly now? Okay, okay. Just a minute. Just is it clear now? Is it fine? Clear? Chalo, can we continue? Is it clear? Okay. I have replaced the mic. Now you have to ये MCQ भी आ सकता है. Nessler's reagent. तो उसका केमिकल फॉर्मूला है K2, potassium वाला part, then mercury, then okay, right? ये फॉर्मूला. What it is used for? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. तीन 3 points you have to remember. 3 points. एक याद रखना है आप लोगों को, फॉर्मूला. Second, you have to remember why it is used to detect presence of ammonia. Detect
presence of what? Ammonia. ठीक है? Still, it is a problem. Problem with voice. Is it clear or not? Is it fine now? Is it okay now? Is it fine now? Is it cracking or okay? I think it is okay now. चलो और तीसरा चीज आपको याद रखना है when you use reagent to detect the presence of ammonia, reagent will turn what? Brown in color. Will turn brown in color. Okay. So solution. If there is ammonia, if you add reagent or the new precipitate which is brown in color. तो एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछेंगे ठीक है कि डिटेक्ट कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हिच कलर तो आंसर इज ब्राउन कलर या इसका फॉर्मूला क्या है सो अगर फॉर्मूला पूछा तो ये है K2HTI4 and what is the purpose why do we use this okay to detect the presence of ammonia is there still a problem with बीच में आवाज कम हो रही है okay I'll use it here I hope problem is solved now as far as voice is concerned, right? So here you have 7 points in front of you, 6 points, sorry, 6 points in front of you, which you should know about the ammonia. अगर ये आप लोगों को 6 पॉइंट क्लियर है तो आप एग्जाम के सारे आंसर्स लिख सकते हो ओके जस्ट टू रिवाइज दिस वंस अगेन ओके जस्ट रिवाइज दिस वंस अगेन तो फर्स्ट वाला रिएक्शन था हाउ डू वी गेट अमोनिया इन लेबोरेटरी okay how do we get ammonia in laboratory okay तो ये reaction है not only this reaction also have I have discussed with you कि क्या क्या यूज करते हैं और क्या क्या यूज नहीं करते okay what are the things which we use and which are the things which we don't use अगर यूज करते हैं तो why और अगर यूज नहीं करते हैं तो why not for example ammonium nitrate cannot be used in a laboratory preparation. Why? Because it is highly explosive. Then what do we use? Ammonium chloride and ammonium sulphate. Okay. अच्छा, which you want? Do you want to balance this? Balancing वाला part हम लोग बाद में देख लेते हैं. Okay, we'll balance this. Don't worry. Okay. And second wala, very very important. Okay, very very important. We teachers know student लोग ये भूल जाते हैं. Okay, so we put this question purposely in your examination. Okay, we put this purposely in the examination. Okay, ammonia gas reacts to what base or metal oxide to give you what metal. सब कम हो गया देखो. Okay, metal oxide में से metal separate हो गया. अमोनिया में से नाइट्रोजन कम हो गया और ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन बना दिया वाटर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट देन व्हाट सो लैब प्रिपरेशन वन दिस फ्रॉम अमोनिया सॉल्ट और दूसरा क्या है अमोनिया कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ मेटल नाइट्राइड इन लेबोरेटरी मेटल नाइट्राइड प्लस वाटर गिव्स यू व्हाट अमोनिया प्लस सॉल्ट ओके एनालिटिकल केमिस्ट्री में कुछ सॉल्ट्स है ऑब्जर्वेशन में ओके अगर आयन यूज किया आयन कौन सा Fe2 प्लस की Fe3 प्लस तो डार्क ग्रीन या रेडिश ब्राउन क्या हम कौन सा प्रेसिपिटेट मिलेगा ओके ऑल दैट यू कैन बी राइटिंग इन व्हाट इन ऑब्जर्वेशन पार्ट राइट बट एनीवे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर ओके method of collection we have in syllabus three methods of collection for ammonia downward displacement of air why because this ammonia gas is lighter than air तो सिर्फ किस मेथड से कलेक्ट करते हैं ये नहीं पूछते तो वो ये भी पूछ सकते हैं व्हाई नॉट यू बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर और व्हाई नॉट ओवर द वाटर तो आपको रीजन पता होना चाहिए राइट
और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन। ओके, ये मोस्टली सारे स्टूडेंट्स को पता होता है। दैट इज इट फॉर्म्स अमोनिया गैस, forms a dense white fume. Okay, when you take a rod, glass rod, in what HCl acid, okay, it becomes wet, and if you bring it in a jar containing ammonia gas, that dense white fumes will be produced. Right? Can we move on to next one, which is the hydrochloric acid? Let me know. Chalo, put a thumbs up in a chat box so that we can continue. We will move on to what? From ammonia, we will move where? To hydrogen chloride. Okay, but before we continue, come here. Let us see. Okay, as I told you, we are going to study everything in a comparative manner, right? So, see here, laboratory preparation of ammonia from ammonium chloride and ammonium salts. We have covered this. Okay, ammonium chloride is NH4 and ammonium salt. दो salt use करते हैं कौन से? अमोनियम, अमोनियम सल्फेट। ओके, एक ही यूज करते हैं अमोनियम सल्फेट। ओके, एंड फ्रॉम मेटल नाइट्राइट। ओके, ये वाला भी कवर कर दिया। इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी है which is called the Haber's process. It is called the Haber's process. At the end we are going to cover this industrial process in detail. But again एग्जाम में जो है वो ये पूछ सकते हैं आप लोगों को, this can be a one-mark question कि how ammonia is, what is the industrial method of preparation of ammonia gas called. So it is called Haber's process. Okay, sulfuric acid के लिए the process industrial method of preparation is called contact process. And for nitric acid, it is Oswald's process, right? Yes, sir. Okay, so we have covered this. Then we have seen laboratory preparation, distiller agent, reagent के बारे में बात कर लिया. Now fountain experiment. Okay, let us talk about the fountain experiment. Okay, fountain experiment. So here we come. We will try to see the fountain experiment और एग्जाम में क्या पूछते हैं fountain experiment. Okay. So see this. Okay, see this. Now, aim of this ammonia fountain, okay, aim of the experiment is to prove that ammonia is highly soluble in water. Highly soluble in water. ठीक है, highly soluble in water. So what do we do? Voice is still breaking. If voice is breaking, then I'll stop this live class and I'll restart again. No, okay, fine. Is voice still breaking? Okay, some of them are saying yes and some of them are saying no. Let me check. Okay, I think sometimes middle में हो रहा है. Okay. Okay, maybe when I turn the connection to that, so maybe because of that. Let me check. Okay. अच्छा, aim is what? कि ammonia is highly soluble in water, right? Okay. तो क्या किया जाता है कि देयर इज अ जार. ओके, सपोज इस जार में क्या, सॉरी, राउंड बॉटम फ्लास्क, it is totally filled with ammonia gas. Let us say this is totally filled
with ammonia gas. So with the help of a stand, this glass jar is set in such a way that it is held inverted with the help of a with the help of a stand. And one more thing, इसको हम लोग क्या करते हैं कि we make it airtight with the help of a okay, this is very disturbing. फाइन और इसके अंदर क्या किया ओके दिस कैपिलरी ओके दिस कैपिलरी एक छोटा सा पाइप we have taken here what red litmus solution. Now aqueous ammonia with water okay aqueous ammonia with water will be basic in nature. ओके विल एक्ट लाइक अ बेस और बेस क्या करता है रेड को ब्लू कलर बनाता है बेस क्या करेगा रेड को ब्लू कलर बनाएगा so what we do is एक ड्रॉपर है जिसके अंदर क्या किया वाटर वाटर भरा हुआ है and we will press this dropper and water will enter it. पहले जो अमोनिया गैस था ड्राई अमोनिया गैस दैट वाज न्यूट्रल बट जैसे ही ये वाटर इंट्रोड्यूस किया गैस ओके ये सारा का सारा गैस जो है वो क्या हो जाएगा इस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा ओके दैट इज व्हाट द एम ऑफ अमोनिया एक्सपेरिमेंट इज वाटर डिसॉल्व हो जाएगा तो हियर व्हाट विल बी क्रिएटेड ओके वैक्यूम विल बी क्रिएटेड वैक्यूम मींस लो प्रेशर एरिया. So low pressure here and high atmospheric pressure. Okay, atmospheric pressure will be high. Physics में पढ़ा था हम लोगों ने atmospheric pressure will be what high. Okay, so what will happen high atmospheric pressure तो ये water जो है यहाँ से अंदर enter करेगा and fountain will be obtained and this will okay ये ammonia gas is basic in nature. ये red litmus solution will be blue in color. Let me know if you have any doubt. Okay, let me know if you have okay मैं पूरा टर्न नहीं करूंगा I'll turn only 90 degree so that there is no voice right or any doubt with this experiment any doubt with this experiment please let me know हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर इसके क्वेश्चन आंसर right okay name the experiment illustrated in this diagram so this experiment is the fountain experiment okay what is the property of the gas that is demonstrated in this experiment property demonstrated is that ki ammonia is highly soluble in water okay name the other gas which exhibit the same property so along with ammonia hydrogen chloride gas also exhibit the same property correct state the color ये बहुत important है state the color of the water which entered the groundwater flask earlier color of the red solution litmus solution was red but जैसे ही वो ground bottom flask में enter करता है तो color of the fountain is what blue जब HCl पढ़ेंगे तो ये सारा reverse हो चुका होगा why water forces itself into a flask okay तो ये physics वाला आंसर है about the pressure when gas was dissolved okay जब gas dissolve हो गया इस water में which was introduced with the help of a dropper तो उस water में सारा का सारा gas dissolve हो गया so there was a vacuum vacuum means low pressure area vacuum means low pressure area और बाहर जो होगा वो high pressure area होगा and because of increasing this pressure water is pushed inside right give the chemical equation for dissolution of gas in water. So this is an addition reaction. Ammonia gas in water gives you ammonium hydroxide. Right? Okay. This again a very important question. You entered a laboratory after a class has completed the fountain experiment. अब फाउंटेन एक्सपेरिमेंट दो गैस के लिए होता है एक HCl गैस के लिए होता है दूसरा अमोनिया गैस के लिए होता है वन इज फॉर द HCl गैस और दूसरा अमोनिया गैस कैसे पता चलेगा आप लोगों को कि ये कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ है अमोनिया की HCl ओके सो आंसर इज व्हाट अगर राउंड एक्सपेरिमेंट के बाद में ये एक्सपेरिमेंट के बाद में अगर फ्लास्क के अंदर ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का सो एक्सपेरिमेंट वाज फॉर अमोनिया और अगर इसके अंदर रेड कलर का दिखाई दे रहा है तो एक्सपेरिमेंट वाज फॉर HCl ओके तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को एग्जाम में
So please make sure that you don't lose your marks over here, right? Can we move on to next one? That is hydrogen chloride. Okay, can we move on to next one? कुछ doubt है तो you can type. Okay, you can type it, otherwise we are moving on to next wala gas which is hydrogen chloride. Can I start? Okay, second one. Hydrogen. When I write hydrogen chloride, chloride IDE. So I am talking about what? Gas, HCl gas. And when I write hydrochloric acid, so I am talking about acid. Okay, so I am talking about acid, right? Can we continue? ये बहुत छोटा सा और easy वाला part है. This part is smaller and easier. Any doubt? Anybody having any doubt anywhere? Let me know. Okay. If you have doubt, let me know. Or should we continue? चलो. Now we saw that ammonia ने हमारा बहुत सारा time consume कर लिया और content but not here. Okay, but not here. यहाँ पर जो है बहुत कम कंटेंट है. से फॉर एग्जांपल पहला आता है लैब प्रिपरेशन. ओके, कैसे याद रखोगे लैब प्रिपरेशन? तो आई ऑलवेज बिलीव दैट आपको वर्ड रिएक्शन याद रखना है. ओके, कि एसिड. ओके फाइन. हमको क्या प्रिपेयर करना है? चलो, एसिड प्लस सॉल्ट. Acid plus salt will give you another acid plus another salt. Another acid plus another salt. Okay. Easy to remember this. Is it easy to remember this? Okay. Acid plus salt gives you another acid plus another salt. Okay. Screen blur हो रहा है. Okay. Maybe when I go out of a screen, तो वो adjust करने लगता है. Okay. Okay. I'll take care of that. Fine. Acid. Now see what I have to prepare. I have to prepare. Okay. Hydrogen chloride, right now? I have to prepare what? Hydrogen chloride. Okay. So I want HCl here. जरा ध्यान से देखो मैं कैसे इक्वेशन बना रहा हूँ. ओके, ऐड करके नहीं जाना है, सब कुछ समझना है, आप लोगों के लिए इजी होगा. ओके, व्हाट आई वांट टू प्रिपेयर. ओके, यस आई एम टॉकिंग अबाउट गैस, लेकिन मैं ये एसिड लिख रहा हूँ. तो ये वर्ड इक्वेशन को ऐसे ही आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. ओके, नाउ in laboratory, what I have to prepare is HCl. Okay, I have to prepare HCl. So what the reaction is acid plus salt. Give you another acid plus salt. And the acid which I want to prepare is HCl. So यहाँ H मैं लिखूंगा acid वाले part में और Cl वाला यहाँ लिखूंगा which is in what salt वाले part. Which acid I am going to use? Okay, again yes, whatever I am going to say, हर एक sentence के ऊपर exam में जो है वो question पूछा जाएगा. Okay. तो ये एसिड HCl is volatile acid. Okay, volatile acid. Now what is volatile acid? What is volatile acid? Volatile का मतलब क्या? कि ये एसिड लिक्विड फॉर्म में, लेकिन थोड़ा हीट होते ही, okay, as soon as it is heated, it gets converted into what? Gas. लिक्विड बन जाता है गैस. ऐसे एसिड को बोलते हैं volatile acid. तो अगर आपको volatile acid यूज करना है, तो what you will be using? Non volatile acid. You will be using non-volatile acid. Okay, non-volatile acid. अब याद रखो हमारे सिलेबस में we have only 3 acids. कौन सा? HCl, nitric acid and H2SO4. करेक्ट ना? वी आर प्रिपेयरिंग दिस. अब हम लोग हमारे सामने कौन से दो ऑप्शन है? ये दो ऑप्शन, HNO3 and H2SO4. ओके, इसमें से कौन सा? अगेन दिस इज अ क्वेश्चन. दिस इज अ क्वेश्चन. हम लोग HNO3 नहीं यूज करेंगे. व्हाई? बिकॉज HCl इज वोलाटाइल एसिड. HCl इज वोलाटाइल एसिड और एक वोलाटाइल एसिड को यूज प्रिपेयर करने के लिए वी विल बी यूजिंग नॉन वोलाटाइल एसिड. ओके, तो नॉन वोलाटाइल एसिड
कौन सा है H2SO4, so we are going to use this H2SO4, right? तो एग्जाम में वो लोग पूछेंगे why H2SO4, because HCl is volatile acid and to prevent this we use non volatile acid, right? और क्यों हम लोग नाइट्रिक एसिड यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी वोलाटाइल है और ये भी वोलाटाइल है, ओके? सो व्हाट विल हैपन, एंड प्रोडक्ट में नाइट्रिक एसिड भी मिला, ओके? आपको HCl भी मिलेगा और कुछ दूसरा एसिड भी, और आपको अनरिएक्टेड जो है वो नाइट्रिक एसिड भी मिलेगा। दोनों वेपर जो होंगे वोलाटाइल एसिड के वो मिक्स होंगे एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम, इट विल बी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम, ओके? आई एम कवरिंग क्वेश्चन आंसर आल्सो, राइट? और सॉल्ट कौन सा यूज करेंगे, ओके? Cl से इनको पता चला कि Cl तो इजीली एंड चीपली अवेलेबल, ओके, दैट इज NaCl। ये NaCl सोडियम क्लोराइड, ये तो हमारे किचन में भी होता है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज NaCl, राइट? So which will be the another salt which we are going to get, okay? तो ये सोडियम है और ये सल्फेट है, okay? ये सोडियम है एंड सल्फेट है, okay? So we will be getting sodium bisulfate, okay? अगर आप लोग टेम्परेचर, if you are keeping temperature below 200 degrees, okay? And there are certain information which you have to compulsorily write in the examination, that is acid which we are going to use, that is concentrated sulfuric acid and non-dilute sulfuric acid, right? That is concentrated sulfuric acid and not the dilute sulfuric acid, right? Okay, and this gives the nature of the sulfuric acid. Sulfuric acid chapter जब पढ़ेंगे तो नॉन वोलाटाइल नेचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में ये रिएक्शन रिपीट होने वाला, right? Okay, and this is what you get. Now what if एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, they ask you one question कि what if temperature is more than 200 डिग्री सेल्सियस, तो दो तीन रीजन है, okay? What if temperature is more than 200 डिग्री सेल्सियस, टेल मी क्या होगा? एक तो क्या होगा, मोर टेम्परेचर, ओके? व्हाट टेम्परेचर वी हैव केप्ट इज लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? कम ऑन टाइप इन द चैट बॉक्स, क्या होगा? इफ देयर इज मोर कौन, ओके? तो सबसे पहले तो फ्यूल वेस्ट हो रहा है, करेक्ट है? फ्यूल वेस्ट हो रहा है, ज्यादा हीटिंग की वजह से हमारे ग्लास के apparatus है दे में क्रैक, ग्लास apparatus में क्रैक, करेक्ट? और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है व्हाट इज दैट कि अगर टेम्परेचर आप लोग इफ यू आर कीपिंग मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस यू डोंट गेट दिस प्रोडक्ट, इंस्टेड व्हाट यू गेट इज सोडियम सल्फेट। सल्फेट का वैलेंस ये 2 है, इधर आ गया, और सोडियम का वैलेंस ये 1 है, ओके? एंड दिस सोडियम सल्फेट इट फॉर्म्स अ हार्ड क्रस्ट, और ये क्या होगा? ये स्टिक होगा ग्लास apparatus को, ओके? ये apparatus को स्टिक होगा एंड इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव, ओके? अगर एक मार्क के लिए एक रीजन पूछा तो आई विल रिकमेंड ये वाला रीजन लिखो, ओके? नॉट फर्स्ट, दैट यू कैन राइट एक्स्ट्रा, ओके? सो दिस इज व्हाट इट इज इंपॉर्टेंट, आर यू गेटिंग इट? फाइन, राइट? एज आई टोल्ड यू, इसमें ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा सा है, तो ये एक पार्ट आपको याद रखना है विथ रीजंस एंड ऑल, और दूसरा पार्ट आपको जो याद करना है, ओके, कि व्हाट ड्राइंग एजेंट वी आर गोइंग टू यूज, व्हिच ड्राइंग एजेंट वी आर गोइंग टू यूज। अगेन हमारे सिलेबस में देयर आर 5 ड्राइंग एजेंट्स, कोई बताएगा कौन कौन से 5 ड्राइंग एजेंट है? एनीबॉडी, व्हिच आर दोस 5 ड्राइंग एजेंट? वन इज कॉन्सेंट्रेटेड, चलो जो यूज करने वाले वो पहला मैं लिखता हूँ, ओके? सो कैल्शियम ऑक्साइड, देन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, राइट? उसके बाद में फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, देन और कौन सा? कैल्शियम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एंड सिलिका जेल, तो सिलिका जेल को तो मेंशन नहीं किया आपके टेक्स्ट बुक में, ओके? तो रिमेंबर ये 5 ड्राइंग एजेंट, okay? In your syllabus 5 drying agents, so which one we are going to use?
Which one we are going to use? We are going to use, we are going to use which one? We are going to use concentrated sulfuric acid, right? अच्छा कौन सा यूज करते हैं एंड कौन सा यूज नहीं करते वो भी पूछते, ओके? विच वन टू बी यूज इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बाकी क्यों नहीं? क्योंकि अदर्स, other drying agent, okay, other, they will react, okay, they will react with what? They will react with HCl to give new product, to give new product. फाइन, तो कुछ और HCl जो मिला था आप लोगों का, ओके, वी वांट टू प्रिपेयर HCl, लेकिन जो HCl मिला था वो भी चले गया क्योंकि HCl किसी और के साथ में रिएक्ट करके आपको क्या मिला? न्यू प्रोडक्ट, ठीक है? इज इट फाइन? राइट? So this question will also be asked in the examination. And I think ये वाला पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज मेथड, मेथड ऑफ कलेक्शन, मेथड ऑफ कलेक्शन, हाउ HCl is collected. I think last part में, okay, over here we have already seen this, okay. There are three methods of collection. There are three methods of collection. Am I right? Okay, upward displacement of air, downward displacement of air and water, over water. हर एक के लिए रीजन है कौन सा मेथड कब यूज करेंगे, ओके? कौन सा कब यूज करने वाले, राइट? हियर व्हिच मेथड डू वी यूज? व्हिच मेथड? कम ऑन टेल मी, टाइप इन द कमेंट बॉक्स, कौन सा मेथड यूज करेंगे? व्हिच मेथड? यस, so method used is upward displacement of air, upward displacement of air. Why? Upward displacement of air. Why this method is used? Because HCl gas is heavier than air. Correct? Correct? Yes. एक एक्सपेरिमेंट भी है, एक्सपेरिमेंट, ओके, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव. डू यू रिमेंबर व्हाट इज दैट एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट इट इज हेवियर देन एयर? क्या आपको पता है वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है वेयर वी प्रूव दैट इट इज हेवियर देन एयर? एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, टेल मी व्हिच इज दैट एक्सपेरिमेंट. कम ऑन टाइप इन द चैट बॉक्स, कौन सा एक्सपेरिमेंट है? Yes, candle experiment. See this one. Okay, this experiment, candle experiment. What we see, a candle hai, which is burning. It is filled with air. This is filled with air, and air supports combustion. Right? Air will support combustion. अब हम एक दूसरा जार लेते हैं, which is filled with HCl gas. Okay, दूसरा glass jar लिया, which is completely filled with HCl gas. Okay, and this gas is heavier. अभी हम लोग देख रहे थे heavier than air, so we will pour. Okay, जब ऐसा करेंगे just like a liquid here, ये fluid है तो it will flow inside this. Okay, and air will be displaced out. अब air नहीं है, ये वाला jar जो है, it is filled with HCl gas, and HCl gas does not support burning. Does not support burning. Okay, does not support burning. So candle will extinguish. Okay, तो ये experiment है. Is it fine? Is it fine? और एक लास्ट चीज आपको याद रखना है, then this is over. That is identification. That is identification. Okay, identification. How do you identify this? What was this? First, second, third, and four, and this is five. Identification. How to identify? Okay, HCl गैस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? With what? चलो टाइप करो. How do you identify? Type in the chat box. Yes. Again same जो last time किया था. Okay, dense white. Okay, you will observe what? Dense white fumes. But this time with what? With ammonium hydroxide. Yeah, aqueous ammonia.
with ammonium hydroxide. Now this time what you will do is you will take a glass jar. You will take a glass jar, glass rod और उसको डिप करेंगे इस लिक्विड में जिसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लिक्विड अमोनिया। ओके, और वो जो है जार विच इज फिल्ड विद HCl गैस, उसमें लेकर आएंगे। देन यू सी डेंस व्हाइट। कैन यू कंपेयर दिस? यहाँ क्या किया था? ओके, डेंस व्हाइट फ्यूम विद HCl एसिड, यहाँ पर एसिड है और अभी जो हम लोग कर रहे हैं वहां पर क्या है? गैस है, राइट? Here ammonia was gas and HCl was acid. Please note this. Ammonia was gas and HCl is acid. अब HCl gas है, okay? Because we are studying about what? Hydrogen chloride gas. HCl gas है and liquid is ammonium hydroxide. Liquid is ammonium hydroxide. Okay, so you have to write your answers properly. Otherwise, you won't be getting marks. Is it fine? Is it fine? तो बस ये 5 चीजें याद रखनी है आपको हाइड्रोजन क्लोराइड के ऊपर। And this is over. Right? This is over. बस और maybe 10-15 minutes, 10-15 minutes more. Okay? क्या कंटेंट बहुत बोरिंग लग रहा है? क्या करेंगे एग्जाम में? ये याद तो रखना पड़ेगा। अगर बोरिंग लगता होगा फिर भी याद तो रखना पड़ेगा। देयर इज नो वे आउट, whether you like it, you don't like it, but this is the method, okay, of learning this. Okay, मुझे स्टूडेंट्स लोग बताते हैं, कुछ टीचर्स लोग सिर्फ पीपीटी रीड करके सुनाते हैं। आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरी रीजन, याद कैसे रखना है वो भी बता रहा हूँ, राइट? अब एच नाउ लेट अस टेक H2SO। चलो एक बार ये देख लेते हैं, हैव वी कवर्ड एवरीथिंग? हैव वी कवर्ड एवरीथिंग? ओके, ये वाला पार्ट तो हो चुका था। नाउ सी हियर, preparation of HCl from NaCl, lab preparation. Okay, lab preparation we have covered this. Okay, ये जरा funnel है, we have to cover this lab preparation. Fountain experiment also, ammonia जैसे ही fountain experiment है, सिर्फ liquid का color reverse है, and then experiment में जो HCl is heavier than what? Air, हाँ, वो candle वाला experiment. Okay. Now for sulfuric acid you have no laboratory preparation, सिर्फ उसका जो है industrial preparation है। We will cover this in detail as well, okay, maybe in next class, but industrial preparation को कहते हैं contact process, okay, और इसका कोई experiment नहीं है। और experimental setup वाला diagram देकर questions आते हैं which is for 3 marks as per your specimen paper. Last year तक diagram based question was for 5 marks. हाँ, but this year in a specimen paper it is for 3 marks. तो most likely अमोनिया का आ सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का आ सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड को नहीं है, ओके, और या तो नाइट्रिक एसिड का आ सकता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। लेट अस कंटिन्यू विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में एक पार्ट याद रखो एज ऑफ नाउ, ओके, दिस इज वेरी इजी, ये 2 मिनट में ही हो जाएगा। नेक्स्ट वी आर लर्निंग इज व्हाट? ओके, थर्ड वन इज सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, ओके, बिटवीन concentrated and dilute sulfuric acid using suitable reagent, any idea what is this suitable reagent? दिस इज श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 2023 में पक्का आएगा क्वेश्चन। लुक एट द स्कोप ऑफ सिलेबस, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, ओके, इसमें कुछ कंटेंट है ही नहीं, यही ज्यादा करके है। व्हाट इज द सुटेबल रिएजेंट व्हिच वी यूज? ओके, राइट इन द कमेंट बॉक्स, राइट इन द कमेंट बॉक्स, यस, व्हाट इज द सुटेबल रिएजेंट? ओके, तो रिएजेंट व्हिच वी यूज इज बेरियम क्लोराइड, barium valency is 2, chlorine valency is 1, so BaCl2. Okay, what will happen in dilute HCl? It will give what? Okay, white. It is soluble or insoluble? Yes, white precipitate. Some of you already have written white precipitate.
but soluble or insoluble. Okay, it will be insoluble. क्यों? क्योंकि वो precipitate है. White precipitate of sulfuric acid है ना, तो barium sulfate of barium sulfate. Barium valency 2, sulfate valency 2. Okay, observation में पूछा तो ये, right? And what about concentrated hydrochloric acid? You don't observe no such precipitate. तो नोट्स में ये वाला और बाकी भी दिए है जो एक्सपेक्टेड है, बट आई थिंक ये पक्का आएगा अगले पार्ट में. ओके, आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, राइट? तो ओनली वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर एज ऑफ नाउ. ओके, एज ऑफ नाउ यही याद रखना है. एनी डाउट रिगार्डिंग HCl? कुछ डाउट होगा तो पूछ लो, अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ऑब्वियसली प्रेसिपिटेट है तो इनसॉल्युबल होगा. यस, इनसॉल्युबल. एनी डाउट विद सल्फ्यूरिक एसिड? बस ये एक ही चीज याद रखना है. हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी है, वी विल सी दैट लेटर ऑन. Chemical property is there, but we will see that later on. Okay, if you have any doubt, please write that doubt. Write your doubt in a comment box. Please write your doubt in a comment box. Yes. Any doubt in sulfuric acid? बस एक चीज याद रख कर जाना है. Fine, let us continue. Fourth वाला part, which is nitric acid. Which is nitric acid. Right? इसमें भी ज्यादा कंटेंट नहीं है. Most of the content is in HCl and ammonia. It is in HCl and ammonia. I hope voice and everything is clear. Voice and everything is clear. Right? Okay. Now see, यहाँ पर भी as we saw, H2SO4 में दो चीजें याद रखनी थी. अमोनिया में क्या याद रखेंगे? Okay, तो first one is the lab preparation. Okay, lab preparation. तो reaction is same like HCl. Okay, acid plus salt will give you what? Another acid plus another salt. Another acid plus another salt. Okay, acid which we are preparing is nitric acid, HNO3. So which is the acid which, what, how do we complete this? So H वाला part इधर लिखो and nitrate वाला part इधर लिखो. Right? So H will come from here, from acid, और salt से मिलेगा nitrate. Is it fine? Is it fine? तो एसिड कौन सा यूज करेंगे हम लोग? एसिड कौन सा यूज करेंगे? ऑब्वियसली सल्फ्यूरिक एसिड. व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड? अगेन एग्जाम क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज नॉन वोलाटाइल. जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे H2SO4 का. ओके, सो इट इज नॉन वोलाटाइल. इट इज यूज्ड टू गेट व्हाट? वोलाटाइल नाइट्रिक एसिड. ओके, नाउ टेल मी सॉल्ट कौन सा बनेगा? अच्छा, लेट अस कंप्लीट दिस. व्हाट डू वी यूज? ओके, जो सॉल्ट यूज करेंगे वैलेंसी 1 वाला यूज करेंगे. ओके, नाइट्रेट वैलेंसी इज 1, तो सॉल्ट में मेटल वाला पार्ट जो है उसमें भी वैलेंसी 1 यूज करेंगे. सो आइदर के, ओके, KNO3 और NaNO3. कोई मुझे बताना KNO3 का नाम क्या है? व्हाट इज नेम ऑफ दिस कॉमन नेम? ओके, व्हाट इज कॉमन नेम? चलो बताओ. यस, दिस इज नाइटर. KNO3 is niter and this is chili saltpeter. Chili saltpeter. Okay, please remember this name. And tell me what salt you are going to get. What salt? Okay, temperature we are going to keep, that is less than 200 degrees Celsius. Okay, that is less than 200 degrees Celsius. So the salt which we get, हाँ, salt कौन सा मिलेगा? K और SO4 वाला. So KHSO4. Sodium bisulfate. Sodium bisulfate. Is it balanced? 2H and 2H. K1, K1H, S1. I think it is balanced, right? No? Yes. Right? So no balancing is required. Correct? Okay.
Now you have to remember that agar, okay, what if temperature is more than 200 degrees Celsius? More than 200 degrees Celsius. I think we have covered this in HCl. ये सारे पॉइंट इंक्लूड होंगे. ओके, ये सारे के सारे पॉइंट इंक्लूड होंगे. ये सारे के सारे पॉइंट इंक्लूड होंगे. More than 20 degrees Celsius means fuel is wasted, right? Fuel is wasted. Plus, there is a chance that glass apparatus may crack. Okay, heat होकर. Okay, nice joke. Tata salt bitter. Okay, Tata namak, देश का नमक. Okay. And in case of that, what you get is sodium nitrate. बराबर ना? क्या मिलेगा यहाँ पर? पोटेशियम पोटेशियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट forms a hard crust. Okay, forms a hard crust. Okay, so difficult to remove. But the extra part. Okay, I'm not writing which I already have covered. ये extra part ये जरा याद रखो. Okay, you are getting what? You are getting a nitric acid. This is very important. Okay, what you are getting? Nitric acid. ध्यान देना यार, दो क्वेश्चन है. दो क्वेश्चन बनता है. ओके, तो ये क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा इसका. ओके, नाइट्रिक एसिड विल डिकम्पोज एंड व्हाट विल बी प्रोडक्ट? डिकम्पोज मतलब ब्रेक होगा. हाँ, डिकम्पोजिशन होगा, ब्रेक होगा. व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रोडक्ट इन केस ऑफ डिकम्पोजिशन? तो डिकम्पोज हुआ H प्लस व्हाट? N प्लस व्हाट? O. H मतलब क्या मिलेगा? ओके, H मतलब क्या मिलेगा? वाटर. N means what? NO2 and O means what? O2. Is this equation balanced? Is this equation balanced? I am sure it is not. Okay. Now remember यहाँ पर एक और गिव रीजन आता है. फर्स्ट लेट अस बैलेंस दिस, फिर और एक गिव रीजन के बारे में बात करें. इज इट बैलेंस? ओके, हम लोग एलसीएम मेथड यूज करने वाले हैं. एलसीएम मेथड. इफ यू डोंट नो व्हाट इज एलसीएम मेथड, वॉच माय वीडियो ऑन बैलेंसिंग द इक्वेशन. ओके, तो H लेफ्ट हैंड साइड में H कितना है? 1. और राइट साइड में कितने H है? 2. सो एलसीएम ऑफ 1 and 2 is 2. हाँ, एलसीएम इज व्हाट? 2. उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, so what we get is 4. हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे? 4 करेंगे हाइड्रोजन. 4 on right hand side and 4 on left hand side and 4 on right hand side. Okay, so 4. Then what? Nitrogen is 4. Nitrogen is 1. So डाल दिया 4. I think oxygen is taken care of. Self balanced है. 4 into 3 is 12. This is 2 and 8, 10 and 2, 12. So this is balanced, right? Okay. So why? Yeah, this reason is very important. Okay, this reason is very important कि why we keep temperature. तो बाकी के जो HCl में reason थे वो सारे included है. But extra is this कि it decomposes to give this reddish brown gas. Now what is happening here? ठीक है. और एक रीजन है, देखो, गिव रीजन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, कि नाइट्रिक एसिड इज कलरलेस. नाइट्रिक एसिड इज व्हाट? कलरलेस. बट in laboratory, nitric acid which you get is yellow in color, light yellow in color or pale yellow in color. Why it is pale yellow in color? Okay, so your reason will be same. Decomposition of nitric acid takes place. Decomposition of nitric acid takes place. So this is very important. Okay, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा. एनी डाउट? एनी डाउट? बस इतना याद रखना है यहाँ से आप लोगों को. ओके, नाइट्रिक एसिड का नॉट एबल टू रिड्यूस द स्क्रीन. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. हाँ, ये प्रिपरेशन और ये टेम्परेचर. ठीक है.
और गिव रीजन में ओके व्हाट आर दी अदर रेगुलर रीजंस जो यहाँ पर आते हैं हाँ ये सब कुछ एक रीजन है व्हाट आर दी अदर रीजंस व्हाई वी कीप टेम्परेचर बिलो 200 डिग्री सेल्सियस ओके तो वेस्टेज ऑफ फ्यूल okay glass apparatus may crack then what forms a hard crust which is difficult to remove correct na hard crust which is but important reason is this important reason is this any doubt fine so let us go back here let us go back here and try to find out ki how much we have covered so we have covered up lab preparation of nitric acid from niter gas which is from niter which is KNO3 not gas it is a salt then what chili saltpeter okay NaNO3 industrial process in Oswald we will see this in detail later on हाँ ये दो रह गया देखो now what is brown ring test जैसे इसमें Nessler's reagent है okay जैसे इसमें Nessler's reagent है इसमें brown ring test what is the aim of the brown ring test ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी लास्ट में ये क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम मोस्ट ऑफ देम वर टेलिंग कि ये नहीं आएगा ये आउट ऑफ सिलेबस है बट ये आया था ओके दिस ईयर दे आर गोइंग टू आस्क Nessler's reagent aim is to what to detect what to detect here to detect presence of ammonia but here to detect what presence of what लिखो चैट बॉक्स में लिखो presence of what presence of what yes nitrate ion okay nitrate NO3 minus ion इस ion को detect करना right what is the formula what is the formula of browning which is formed what is the formula चलो टाइप करो चैट बॉक्स में it is FeSO4 dot NO FeSO4 dot NO okay FeSO4 dot NO nitroso ferrous sulfate okay name is nitroso ferrous sulfate okay नाम भी पूछ सकते हैं nitroso ferrous sulfate correct fine now what are reactants product तो ये है what are reactants reactants are what nitric acid okay freshly prepared FeSO4 and what and is it nitric acid or sulphuric acid tell me is it nitric acid or sulphuric acid nitric acid and obviously last one is color so color of FeSO4 dot NO browning test so it is brown तो ये तीन चार चीजें आप लोगों को याद रखनी है कलर तो याद रह जाएगा ये तीन चीजें फॉर नेशनल एजेंट आप रिमेंबर थ्री थिंग्स ओके फॉर्मूला क्या है K2HgI4 एम क्या है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया राइट ठीक है और कलर क्या था इसका कलर ब्राउन था इसका भी ब्राउन है तो इजी टू रिमेंबर दोनों का कलर ब्राउन करेक्ट ना एंड व्हाट इज एक्वा रिजिया इज इट फाइन एनी डाउट विद दिस what is aqua regia aqua regia is combination of HCl okay hydrochloric acid very reactive acid and a nitric acid okay hydrochloric acid and nitric acid in ratio 3 is to 1 in what ratio 3 is to 1 ये ratio पूछा जाता है MCQ फॉर्मेट में राइट और क्या है इसका प्रोडक्ट क्या है इट गिव्स व्हाट नेसेंट क्लोरीन Cl इसका प्रोडक्ट होता है
and it can dissolve what? Noble metals. Noble metals. What do we mean by noble metals? Okay, what do we mean by noble metals? So noble metals means हमारे पास reactivity series है, right ना? Katrina, car, Mange, Alto, Zen, Ferrari. Okay. So towards the end, what do we have? Silver, gold, and platinum. Okay, they are noble or they are non-reactive. They are noble or non-reactive. They are noble or non-reactive. ये nascent chlorine जो है, okay, why it is written inside a box? Okay, stable तो ये होता है, Cl2 is a diatomic. Okay, chlorine is a diatomic gas और a diatomic molecule और ये बहुत अनस्टेबल होता है, इसलिए इसको बॉक्स में लिखते हैं. ओके, और इसको बोलते हैं nascent. Okay, nascent chlorine has a capacity to dissolve even noble metals, even a noble metal. तो ये दो तीन चीजें याद रखनी है आपको. क्या कि रेशो क्या है, HCl and H, प्रोडक्ट क्या है तो HCl and सॉरी रिएक्टेंट क्या है, HCl and HNO3. Reactants are HCl and hydrochloric acid and nitric acid, two reactive acids. What is the ratio in which they are used? 3:1. एक प्रोडक्ट जो होता है रिएक्शन याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बट वन ऑफ द प्रोडक्ट नेसेंट क्लोरीन. व्हाई दिस इज स्पेशल? क्योंकि इट हैज द एबिलिटी टू डिसॉल्व नोबल मेटल. हाँ, नोबल मेटल. कौन से नोबल मेटल? हाँ, तो सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम एंड फॉर्म अ रिस्पेक्टिव सॉल्ट. जैसा सिल्वर क्लोराइड, ऑरम क्लोराइड या गोल्ड वाला क्लोराइड, प्लैटिनम क्लोराइड. राइट. So this also we have covered. Right. So this page we have covered. Now what is to be covered is the chemical properties. In सबके इन चारों के chemical properties. Okay. Maybe we will. It's already very late now, so we will do that in our next class. हाँ, chemical properties. इसमें ज़्यादा time नहीं लगता और सबके special reactions. Most of the question in your examination will be from this special reaction. Okay, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि शुड आई कवर दिस, शुड आई गो लाइव टू कवर ऑल दिस, कि हम लोग नोट्स में से पढ़ रहे हैं. बाय द वे, इस नोट्स को डाउनलोड करने का लिंक जो है इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द डाउन टू डाउनलोड दीस नोट्स. Okay, also you can download my app to download and get all these notes. Ah, this is in a free section, right? इफ यू वांट लाइव सेक्शन आई टेक फॉर दिस. ये तो करना ही है आप लोगों को. एंड एग्जाम में सारे के सारे रिएक्शन इसलिए से आएंगे बिकॉज दीज आर स्पेशल रिएक्शन. ओके. एंड इफ यू गो डाउन इन दिस नोट्स, आई थिंक हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स के पास ये ऑलरेडी नोट्स है, बट देयर आर सर्टेन चेंजेस व्हिच आई हैव मेड इन दिस नोट्स. प्लीज make those changes in your printout. Then what? Okay, chemical test to distinguish between the following. So again, this can be a 4 6 mark का question. So read this carefully. But again, मुझे लगता है जो सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट वाला वो आने का ज्यादा चांस है. Okay. And also, okay, maybe in next class we will cover this industrial preparation of sulfuric acid by contact process, nitric acid by osmolar process, and ammonia by Haber's process. Okay, there are a lot of questions in your chemistry exam from this page also. I'll give a link in the description box. If you have any doubt, let me know. Otherwise, I'll end this class. Before the examination, generally I take a marathon class of about 4 hours also, but I think आज के लिए इतना ही काफी है, right? Any doubt, let me know, or should I end the class? Is there any doubt, difficulty? Do you want to ask me anything from chemistry? You can ask me. You can ask me anything outside this chapter as well. No doubt? Okay. Fine. So in my next chemistry ka live class, maybe I'll continue with the same. Okay. Even I have what? I have chemistry dictionary
Especially I have prepared for this year's exam, okay? Whereby you can go on और ये अगर 5-6 पेजेस जो है वो अगर आपको आ गए, तो आई थिंक आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, राइट? Preparation of alkanes, alkenes, alkynes, everything, okay? How many pages are there? About 9 pages. ये 9 pages. Okay, see here I have given about Nestler's reagent जो आज मैंने पढ़ा है. Browning test, Aquaregia, distinguishing test between हाँ ये सब कुछ आने वाला है एग्जाम में. Then बैलेंस केमिकल इक्वेशन. Okay, पूरे पूरे syllabus में there are around what? Less than around 60 chemical equation. हाँ, about 66. इसके बाहर से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा. Okay, so if you take what 2 days challenge और उसमें ये chemistry complete कर लोगे, everything is done. So around these 9 pages and what? These 9 pages and this 7 pages. ये 9 और 7 pages कर लिया तो केमिस्ट्री में और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. 80 on 80 is guaranteed. Should I end my class? Elon Musk, Rajvi, Mrunal is Shlok Shetty, Diya, Smarty, okay, Smarty Hardy. Fine. So here I end my class. See you all in my next live class. Right? Chalo, bye, bye everyone. Good night. Okay, good night. I hope class was not that boring. Exam oriented था तो I wanted to concentrate on the detail वाला part. Okay. चलो bye. Good night. Good night. Good night. Good night to all.